In this video, we are going to discuss about the chapter Conditional Sentences. So, what do you mean by a conditional sentence? Conditional sentence कौन? A conditional sentence is a sentence that express condition and the possible outcome or result. तो conditional sentence होची एमिति sentence जोटा कंडीशन को दर्शाए जदियो एटा हेई थांता ताले ता रिजल्ट कौन हेई थांता. फॉर एग्जांपल, इफ ही वेर हियर ही वुड हेल्प अस. जदियो सी एठी थांता होची कंडीशन. इफ ही वेर हियर आउ ही वुड हेल्प अस होची ता रिजल्ट. सी जदि एठी थांता आमको सी हेल्प करि थांता. सो द कंडीशनल सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस. कंडीशनल सेंटेंस गुराकर दीटा क्लॉज थाए. फर्स्ट होची द इफ क्लॉज विच इज द कंडीशन एंड द मेन क्लॉज which is the result. So next comes types of conditional sentences. तो conditional sentences केतेटा टाइप रो अछि? Conditional sentences चारटा टाइप रो अछि. First होची type 0 conditional sentences. So in this conditional sentences, in if clause present simple is used and in main clause also present simple is used. तो present simple tense टा if clause और main clause दीटा जगार यूज हुए टाइप 0 फॉर्म ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस मानकरे. आर एग्जांपल कौन? इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स. तो आम जदि पानी की गरम करिवो सेटा बॉयल हबो. देन आउ गोटे एग्जांपल हैला इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस. तुम जदि पानी को फ्रीज करदब कि रेफ्रिजरेटर रे रखिदब सेटा कौन आइस को कन्वर्ट हो. तो एटी प्रायतः जनरल ट्रूथ टाइप सेंटेंसेस रे यूज हुए. नेक्स्ट कम तार यूजेस कौन? यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और स्पेसिफिक फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू व्हेन द कंडीशन इज मेट. तो यूजेस होची एटा प्राय जनरल ट्रूथ मानकर यूज हुए. स्पेसिफिक फैक्ट्स जोटा ऑलरेडी प्रूवन ऑलरेडी सत जिनस जोटा को आउ प्रूफ करिया दरकार नहीं से सब जिनस रे यूज हुए. नेक्स्ट कम्स सेकेंड टाइप दैट इज फर्स्ट कंडीशन और टाइप 1 कंडीशन of conditional sentences. In this type of conditional sentences, in if clause present simple is used and in main clause simple future is used like shall or will. तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस मानकर कौन हुए ना जोठी इफ क्लॉज थाए सेठी ही खाली प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज हुए आउ जोठी मेन क्लॉज थाए सेठी सिंपल फ्यूचर यूज हुए लाइक शैल और विल. फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम. जदियो वर्षा हुए घरे रहिबी. सो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस मानकर यूजेस कौन ना यूज टू एक्सप्रेस रियल एंड पॉसिबल कंडीशंस दैट आर लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर. तो आमे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस सेतबेले यूज करू जेतबेले गोटे जिनसर अकरेन्सर पॉसिबिलिटी अधिक थाए. लाइक मु जेंति गोटे एग्जांपल देइथिली कि इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम. तो जदियो वर्षा हैला माने कौन वर्षा हबार श्योर चांसेस अच्छी. ओके, जदियो वर्षा हैला मु घरे रहिबी. नेक्स्ट कम्स थर्ड नंबर सेकेंड कंडीशन और टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस. सो इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस इन इफ क्लॉज सिंपल पास्ट इज यूज्ड एंड इन मेन क्लॉज सिंपल पास्ट इज यूज्ड. तो इफ क्लॉज और मेन क्लॉज रे सिंपल पास्ट यूज करा जाए इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रावेल द वर्ल्ड. सो ये एग्जांपल रे कौन कहुई इफ आई वॉन द लॉटरी मु जदियो से लॉटरी जीति थांती आई वुड ट्रावेल द वर्ल्ड मु वर्ल्ड जाक ट्रावेल कर थांती. तो ना से लोकटा लॉटरी जीति ना अबिका जाके से वर्ल्ड ट्रावेल करिछि. दीटा को हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ओके, माने रियलिटी रे किछि भी सिचुएशन एंती नाही. नेक्स्ट कम्स आमे टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस मानू कोठी कोठी यूज करूँ. सो यूज टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. सो एमितिया हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस रे यूज करूँ जोटा ना केबे प्रेजेंट रे हेइछि ना फ्यूचर को हबार किछि चांसेस अच्छी. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4 थर्ड कंडीशनल टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस. सो in this type 3 conditional sentences, in if clause, past perfect is used and in main clause, would have plus past participle is used. So, our example कौन हबो? If I had studied harder,
मु जदियो पढ़ी थांती बढ़िया से पूर्व पढ़ी थांती आई वुड हैव पास द एग्जाम मु एबे जो एग्जाम टा कंडक्ट होची सेथरे भल भाबरे पास करी पारथांती. Now comes to the uses of the type 3 conditional sentences. So it is used to express the hypothetical situations in the past that did not happen. So type 3 conditional sentences मानंकरे आमे usually कथा हो से hypothetical situations बिसरे जोटा past रे केबे भी हेई नाई. Then comes example of all the types of conditional sentences we have read till now. So first is type 0 conditional sentences which are generally used in the general truth or specific facts. Like if you freeze water it turns to ice. जणे जदियो वाटर को रेफ्रिजरेटर रखी देकी फ्रीज कर दबो से कोन आइस को कन्वर्ट हे जबो. If you mix red and blue you will get purple. जणे जदियो रेड और ब्लू कलर को मिक्स कर दबो से पर्पल कलर पाइबो. If you press the switch the light turns on. जदियो जणे स्विच को प्रेस करिवो लाइट रो ताले लाइट टा जळिवो. So next example is if you don't water plants they die. तमे जदियो गछ को पानी दबनी गछ मर जिवो. If you touch fire you get burned. तमे जदियो फायर को जाई छुइबो तम हाथ फटका हे जिवो. Then comes type 1 conditional sentences which are often used to express real and possible future condition. जो condition की जो situation गुरा का future को जाई possible. Like if she studied harder she will pass the exam. जदियो से अबिका बहुत भल से पाठ पढ़िबो कष्ट करिकी पाठ पढ़िबो सी आगु को आस्थो एग्जाम रे पास करि जिवो. If it's sunny tomorrow we will go to the beach. जदियो काली खरा हैला ताहले आमे माने बीच को जिबा. ओके. If you don't hurry you will miss the bus. तू जदियो जल्दी जल्दी रेडी न हेलु तू बस को मिस कर दबो. If I have time I will help you with a project. तो मो पाखे जदियो टाइम हबो मु तते तो प्रोजेक्ट रे सहाय्य करि परिबी. If you eat too much you will get sick. तो जदियो अधिक खाइ दबो गोटे दिन रे ताले तू असुस्थ होई जिवो. Next comes type 2 conditional sentences which we often use during hypothetical present of future situation. Like if I were rich I would buy a mansion. तो 80% कौन कहूँ मु जदियो रिच थांती मु मैंशन किनी थांती. So the person is not yet rich enough to buy a mansion. If he were here he would help us. से जदियो अबिका एटी प्रेजेंट थांता ताहले से हमको हेल्प कर थांता. If I had a car I would drive to work. मो पाखरे जदियो कार थांता मु ताकू ड्राइव करिकी निज काम को नेकी जाई थांती. So से पर्सन पाखरे एबे भी कार नाही. So it is a hypothetical situation. If she knew the answer she would tell us. ताको जदि आंसर जाना थांता तो से हमको इन्फॉर्म कर थांता कही थांता. If he lived in a bigger house we would have more space. तो से जदियो बड़ घरे रही थांता ताले आम समस्तଙ୍କ पाखरे enough जगह थांता. Next is type 3 conditional sentences which is mostly used in hypothetical past situation. ये सब सेंटेंस रो सिंपल मीनिंग हैला कि गोटे पास्ट एक्शन को भाबिबा कि जदियो ये एक्शन टा हेई थांता ताले अबिका को ता रिजल्ट किछि डिफरेंट थांता. Like if he had left earlier he would have caught the train. से जदियो पूर्वरु टिके आगुआ बाहर थांता ट्रेन धरिया पे से अबिका ट्रेन रे थांता. If I had known about the party I would have attended. मु जदियो पूर्वरु पार्टी विषय रे जानी थांती मु पार्टी टा अटेंड कर थांती. If she had listened to me she wouldn't have made the mistake. से जदियो पूर्वरु मते सुनी थांता मु जहा कहउथिली से ए भलिया भूल करि न थांता. Next is if he had taken the route we would have arrived sooner. तो से जदियो से रूट को चूज कर थांते ताले आमे जल्दी पहुंची सारंतेनी. If they had studied they would have passed the test. से जदियो पढ़ी थांते पूर्वरु से ये टेस्ट रे आराम से क्वालिफाई कर जाई थांते कि पास कर जाई थांते. Like, share and subscribe. Thank you for watching this video.